Good morning, everyone. This is your Nilofar ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know that we are doing the syllabus of internal assignment B3. Our subject is English grammar, and in today's video I will explain you lesson 22. Topic of the lesson is transformation of sentences. So, in this lesson I will explain you how we can transform a sentence from one type to another. So, let's get started. Let's see first of all what is transformation of sentences. Transformation of sentences refers to the conversion of sentences from one type to another without changing the meaning. So as it is written कि transformation of sentences refer करता है sentences के conversion को, that you have to change a sentence from one type to another type without changing the meaning. बिना अर्थ बदले किसी वाक्य को एक टाइप से दूसरे टाइप में चेंज करना, that is called transformation of sentences. Let's see the examples. So it is written, she wants to learn a new language. वो एक नई भाषा सीखना चाहती है, which is assertive sentence. So as you already know that assertive sentences include both affirmative and negative sentences. So when we have to change an assertive sentence into interrogative sentence, so we can change it by making negative also. So it will be, doesn't she want to learn a new language? क्या वो नई भाषा नहीं सीखना चाहती है? So we have made an interrogative sentence without changing the meaning. Second is Mr. Parekh is a rich businessman, which is a simple sentence because only one clause is given. Mr. Parekh एक rich businessman है, so we have to change to complex. Mr. Parekh is a businessman who is rich. Mr. Parekh एक businessman है जो कि अमीर है. There are different ways in which we can transform a sentence. बहुत सारे ऐसे ways हैं जिनके थ्रू हम एक sentence को transform कर सकते हैं दूसरे type में. As I have already explained you types of sentences in the previous lesson also, that a sentence can be differentiate on the basis of its meaning and on the basis of its structure. On the basis of meaning, there are many types of sentences, that is assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, exclamatory sentence, and on the basis of structure there are four types of sentences, that is simple sentence, compound sentence, complex sentence, and complex compound sentences. So these are the types of sentences. So we can change a type of sentence to another type without changing the meaning. We are not changing the meaning, yet we are transforming a sentence into another type. So here first of all we will learn how we can interchange an affirmative sentence to negative sentence. So these are the types of sentences based on the meaning. So interchanging of affirmative to negative sentences. Let's see the rules. There are three ways to change an affirmative सेंटेंस टू निगेटिव वन. तीन तरीके होते हैं कि आप एफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं. फर्स्ट वे इज यूजिंग एंटोनिम्स ऑफ सम वर्ड्स इन द सेंटेंस. कुछ वर्ड्स के आप एंटोनिम्स यूज कर लीजिए. वी हैव टू मेक अदर नेसेसरी चेंजेस इन द सेंटेंस, और उसी के अनुसार जो दूसरे ज़रूरी चेंजेस होते हैं वो भी हमें करना होते हैं. लाइक द एग्जाम्पल इज गिवन, शी ऑलवेज रिमेंबर्स टू विश मी ऑन माई बर्थडे. वो हमेशा मुझे मेरे बर्थडे पर विश करना याद रखती है. सो हमने क्या किया, शी नेवर फॉरगेट्स to wish me on my birthday. So always का हमने never किया, which is opposite एंटोनिम, एंड रिमेंबर्स का किया forgets. So हमने क्या किया, opposite के थ्रू, एंटोनिम्स के थ्रू हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया फ्रॉम एफर्मेटिव टू निगेटिव. शी ऑलवेज रिमेंबर्स टू विश मी ऑन माई बर्थडे, हमेशा याद रखती है और वो कभी भी नहीं भूलती है. सेकेंड इज कन्वर्टिंग अ सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस into a negative interrogative sentence. As I have already explained you above in the example कि हम एक affirmative sentence को जब हम interrogative में change करेंगे तब हम उसको negative interrogative बना सकते हैं. We have to make other changes in the sentence. So as already I have explained कि इसके साथ साथ जो भी necessary changes होते हैं वो भी हमें करना होते हैं. She wants to participate in the concert. वो concert में participate करना चाहती है. So हमने क्या किया, इसको interrogative निगेटिव बना दिया. डजंट शी वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्सर्ट. क्या वो कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती है. थर्ड वे इज रिप्लेसिंग द वर्ड ओनली विद नन बट. इफ ओनली वर्ड इज गिवन इन द सेंटेंस विच इज एफर्मेटिव, सो व्हेन वी हैव टू मेक इट्स निगेटिव, सो हम क्या करेंगे, ओनली को नन बट से चेंज कर देंगे. लेट्स सी द एग्जाम्पल. ओनली द विनर विल बी गिवन अ प्राइज. केवल एक विनर को ही प्राइज दिया जाएगा. सो हमने कैसे चेंज किया, ओनली को नन बट से चेंज किया. नन बट द विनर विल बी गिवन अ प्राइज. कोई भी नहीं बट लेकिन विनर को प्राइज दिया जाएगा. तो दीज वर द वेज थ्रू विच वी कैन चेंज एन एफर्मेटिव सेंटेंस टू नेगेटिव सेंटेंस. नाउ लेट्स सी फॉरवर्ड. The next topic is interchanging assertive and interrogative sentences. How we can interchange assertive and interrogative sentences.
So if an assertive sentence is positive, as I have already told you कि assertive sentence include both positive sentences and negative sentences. So if an assertive sentence is positive, it will be negative in the interrogative form and vice versa. Vice versa means it means just opposite. जो भी कहा जाएगा उसका बिल्कुल opposite हो जाएगा. So अगर आप एक assertive sentence को positive sentence को negative में change करेंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, सो ये आपका निगेटिव में रहेगा. रिमेंबर दैट एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज चेंज टू एजर्टिव व्हेन द क्वेश्चन इज यूज्ड टू एम्फेसाइज अ पॉइंट रेदर देन टू सीक आंसर. बट लेकिन ये याद रखिए कि आपका एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो एजर्टिव में जब चेंज होगा, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन होगा दैट शुड बी यूज टू एम्फेसाइज अ पॉइंट रेदर देन टू सीक आंसर. उसमें किसी पॉइंट को एम्फेसाइज किया जाएगा, बट नॉट इतना नहीं कि आंसर पर ज़्यादा प्रभाव दिया जाएगा, बट एक पॉइंट पर जोर दिया जाएगा. एग्जाम्पल यू कैन सी, रफत इज एन ऑनेस्ट मैन. सो रफत एक ऑनेस्ट मैन है. सो क्या किया हमने, इजंट रफत एन ऑनेस्ट मैन. सो हमने इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव बनाया. हु नोज वेयर द बॉय वेंट, किसे पता है वो लड़का कहाँ गया. नो वन नोज वेयर द बॉय वेंट, किसी को नहीं पता कि वो लड़का कहाँ गया है. So remember one thing, when you are changing an interrogative sentence to assertive sentence, so क्या होगा, question जो होगा that should be used to emphasize a point rather than to asking an answer. Next point is interchanging exclamatory and assertive sentences. How we can interchange exclamatory and assertive sentences. So exclamatory is clear to all of you. Sentences which show sudden feelings, and assertive sentences, as I have already told you, it includes both positive and negative sentences. So an exclamatory sentence can be changed to assertive by expressing the feelings as a statement. So जो feelings हमने exclamatory में express की हैं वो हमको एक normal statement, एक कथन के द्वारा express करना होंगी. Words like ls, o, would that, how and what in the exclamatory sentence are not retained in the assertive sentence. So जो words होते हैं to express the sudden feeling like ls, o, would that, how, इन तरीके के words को हम assertive sentences में use नहीं करेंगे. We will write a simple statement. Like example you can see, the opening ceremony was spectacular. जो opening ceremony थी वो बहुत शानदार थी. So if we are changing to exclamatory, the first one is assertive sentence because we have stated a sentence here, and second is what a spectacular opening ceremony, कितनी spectacular opening ceremony थी, तो that is exclamatory. How tall is that man, वो आदमी कितना लंबा है, so that is showing surprise, that man is very tall, वो व्यक्ति बहुत लंबा है, it is a normal statement. So like that you can interchange exclamatory sentence to assertive or assertive sentence to exclamatory. Now let's see forward. Next is changing the degrees of comparison. So degrees, everyone knows about that. There are three types of degrees. First is positive degree, second comparative degree, in which we compare two person or two thing, and then superlative degree where the comparison is there between more than two people. So क्या रहता है, we can change the structure of a sentence by changing the degree of comparison of the adjective and adverbs in the sentence. So in the lesson of adjective and adverbs, I have explained you that there are degrees of adverbs also, and the same type of degrees are there. So if we have to change the structure of a sentence, so we can change the structure of a sentence by changing the degree of comparison also. So we can change the degree of adjective also, and we can change the degree of adverbs also. Now let's see. So changing the positive degree to comparative degree. Positive degree, there is no comparison is there in positive degree. So कैसे, how can we change a positive degree to comparative? Let's see it. When we change the positive degree to comparative, we change the adjective adverb from the positive to comparative. So जब कभी भी हम डिग्री चेंज करते हैं तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव डिग्री को comparative में चेंज कर देते हैं. अगर हमें comparative में चेंज करना है, so क्या करते हैं, we leave out as in the sentence. If as is given in the sentence, तब हम उसको हटा देते हैं and use more, because comparison के लिए more का use किया जाता है. Then obviously comparative degree में then use होता है. If the sentence is a affirmative, if the sentence is affirmative, it is changed to negative and vice versa. Again, अगर आपका sentence जो है वो affirmative में है, so वो आपका negative में change हो जाएगा. Vice versa means एकदम opposite. Example you can see,
रितिका इज एज सेंसिबल एज हर ब्रदर, सो दैट इज पॉजिटिव डिग्री. रितिका उतनी सेंसिबल है जितना कि उसका भाई है. सो इफ वी हैव टू चेंज टू कंपैरेटिव देन वी हैव चेंज रितिकाज ब्रदर इज नॉट मोर सेंसिबल देन हर. रितिका का ब्रदर उससे ज्यादा सेंसिबल नहीं है, मीन्स दे बोथ आर ऑन द सेम लेवल. सो हेयर हमने क्या किया, एज को रिमूव किया एंड हमने मोर एंड देन को यूज किया. सेकेंड सेंटेंस इज आई लाइक पास्ता मोर देन पिज्जा, दैट इज कंपैरेटिव डिग्री. मुझे पास्ता पिज्जा से ज्यादा पसंद है. आई डोंट लाइक पिज्जा एज मच एज पास्ता. सो हमने क्या किया, पॉजिटिव डिग्री में निगेटिव बना दिया इसका, बिकॉज इट वॉज एन एजर्टिव सेंटेंस, सॉरी इट वॉज एन एफर्मेटिव सेंटेंस. सो मुझे पिज्जा उतना पसंद नहीं है जितना पास्ता. नेक्स्ट इज चेंजिंग द कंपैरेटिव टू superlative degree. How we can change a comparative degree to superlative degree? When we change the comparative degree to superlative, we change the adjective adverb from the comparative to superlative. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, adjective और adverb का जो comparative form होगा उसको superlative form में change करेंगे. We leave out the words more than, like we have used more and than in the comparative degree. तो हम यहाँ पर उसको हटा देंगे and हम use करेंगे any other. To change a sentence from any other degree to the positive we use words like no other and very few. किसी भी डिग्री के सेंटेंस को if we have to make the sentence into positive degree तब हम क्या यूज करते हैं, we use words like no other and very few. Examples you can see, this dress is more gorgeous than any other dress in your wardrobe. ये ड्रेस इतनी gorgeous, सारी ही ड्रेसेस से gorgeous है तुम्हारे wardrobe में जो है, which is comparative degree because comparison is being given. सो हमने कैसे बनाया पॉजिटिव, नो अदर ड्रेस इन योर वार्डरोब इज एज गॉर्जियस एज दिस वन. कोई भी ड्रेस तुम्हारे वार्डरोब की इतनी गॉर्जियस नहीं है जितनी ये है. सो हमने ऐसे पॉजिटिव बना दिया एंड देन हम क्या करते हैं, सुपरलेटिव भी बना सकते हैं. दिस इज द मोस्ट गॉर्जियस ड्रेस इन योर वार्डरोब. ये सबसे ज्यादा गॉर्जियस ड्रेस है तुम्हारे वार्डरोब की. सो इन देयर हमने क्या किया, मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाया है. नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज मोर कंपैशनेट दैन मोस्ट अदर पीपल आई हैव मेट. ये ज़्यादा कंपैशनेट व्यक्ति है, लड़की है, जितने लोगों से मैं मिला हूँ उनसे ज़्यादा, विच इज़ कॉम्परेटिव डिग्री. सो वी हैव मेड सुपरलेटिव, शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कंपैशनेट पीपल आई हैव मेट. जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ ये उनमें सबसे ज़्यादा कंपैशनेट है. सो नेक्स्ट हमने पॉजिटिव बनाया. आई हैव टोल्ड यू कि अदर डिग्रीज वी कैन चेंज टू पॉजिटिव बाय यूजिंग द वर्ड्स लाइक वेरी फ्यू एंड नो अदर. सो वेरी फ्यू पीपल आई हैव मेट आर एज कंपैशनेट एज हर. बहुत कम लोग जिनसे मैं मिला हूँ वो उसकी तरह कंपैशनेट हैं. सो हेयर वी हैव learned how we can change degrees of adjectives and adverbs when we have to change the structure of a sentence. Now next topic is changing parts of speech. Parts of speech we can change also. It is possible to rewrite a sentence by substituting one part of speech with another without changing the meaning of the sentence. So ये possible है that we can rewrite, हम दोबारा लिख सकते हैं एक sentence को by substituting. हम एक पार्ट को किसी भी सेंटेंस के दूसरे पार्ट से चेंज कर सकते हैं बिना किसी मीनिंग में चेंजेस किए. सब्सटीट्यूटिंग अ नाउन, हाउ वी कैन रिप्लेस अ नाउन. रीड these sentences to understand the way a noun can be replaced with an adjective, adverb or verb. So these are the ways that we can replace a noun with adjective, adverb or verb. As you already know that there are many type of many words which are adjective, which are verb, which are noun. So sometimes we can make verbs from noun also. So let's see how we can replace noun to adjective, adverb or verb. The first example is, did you pay attention when the lesson was taught in the class? So attention is noun. क्या तुमने ध्यान दिया जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था. सो हमने यहाँ किया क्या किया, वर यू अटेंटिव व्हेन द लेसन वाज टॉट इन द क्लास. क्या तुम अटेंटिव थे जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था. सो दैट इज एडजेक्टिव बिकॉज अटेंटिव इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ यू. तुम अटेंटिव थे एंड देयर अटेंशन वाज नाउन. सो हमने क्या किया, बिना मीनिंग चेंज किया हमने नाउन को एडजेक्टिव में चेंज कर दिया. अटेंशन इज नाउन, अटेंटिव इज एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज द चाइल्ड इज स्लीपिंग इन पीस ऑन द बेड. बच्चा जो है वो शांति से सो रहा है. पीस इज नाउन, द चाइल्ड इज स्लीपिंग पीसफुली ऑन द बेड. सो पीसफुली इज एडवर्ब बिकॉज इट इज टेलिंग द क्वालिटी ऑफ वर्ब. बच्चा कैसे सो रहा है, पीसफुली सो रहा है. सो मीनिंग इज नॉट चेंज. ऊपर हमने बोला बच्चा शांति से सो रहा है एंड अगेन द मीनिंग इज सेम, द चाइल्ड इज स्लीपिंग पीसफुली ऑन द बेड. हैव यू
थॉट ऑफ एनी गेम्स फॉर द अम्यूजमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, क्या बच्चों के मनोरंजन के लिए तुमने कोई भी गेम्स सोचे हैं? सो अम्यूजमेंट इज नाउन, सो हमने कैसे चेंज किया वर्ब में, हैव यू थॉट ऑफ एनी गेम्स दैट विल अम्यूज द चिल्ड्रन, क्या तुमने कोई ऐसे गेम्स सोचे हैं जो बच्चों को अम्यूज करें। सो हियर हमने क्या किया, अम्यूजमेंट से अम्यूज कर दिया विच इज वर्ब. So that were the ways that we can change a noun to another, that like adjective or adverb. How we can substitute a verb. Substituting a verb. Read these sentences to understand the way a verb can be replaced with an adjective, a noun or an adverb. So read these sentences. आप इसके through समझ पाएंगे how we can replace a verb to adjective, noun or adverb. The first example is the deliciousness of the food एट सच अ स्मॉल ईटरी अमेज्ड अस. जो डिलीशियसनेस यानी स्वादिष्टपन था फूड का, उसने हमें अमेज्ड कर दिया विच इज वर्ब. सो हियर वी हैव टू चेंज इनटू एडजेक्टिव. सो हाउ वी हैव चेंज्ड, द डिलीशियसनेस ऑफ द फूड एट सच अ स्मॉल ईटरी वाज अमेजिंग. सो अमेजिंग आपका एडजेक्टिव हो गया बिकॉज डिलीशियसनेस आपका नाउन है और डिलीशियसनेस कैसा था, अमेजिंग था, दैट इज एडजेक्टिव. सेकेंड एग्जाम्पल इज हैव यू सीन द वंडरफुल स्टैम्प्स जो सुनील ने इकट्ठा की है. सो कलेक्टेड इज अ वर्ब विच इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सो वी हैव टू चेंज टू नाउन. हैव यू सीन सुनील्स वंडरफुल कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स. सो कलेक्शन इज अ नाउन. क्या तुमने सुनील का वंडरफुल कलेक्शन देखा है स्टैम्प्स का. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियरिंग अबाउट द इंडियन टीम्स विन. ये सुनने पर कि इंडियन टीम जीत गई है. रिया वॉज एक्साइटेड एंड स्टार्टेड क्लैपिंग. रिया बहुत एक्साइटेड थी और उसने क्लैप करना स्टार्ट कर दिया था. सो वॉज एक्साइटेड आपका क्या है, वर्ब है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. हियरिंग अबाउट द इंडियन टीम्स विन, जब सुना कि इंडियन टीम जीत गई है, रिया स्टार्टेड क्लैपिंग एक्साइटेडली. सो दैट इज एडवर्ब, एक्साइटेडली. रिया ने क्लैपिंग करना शुरू कर दी उत्सुकता के साथ. सो दैट्स हाउ वी कैन सब्सटीट्यूट अ वर्ब ऑल्सो. नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूटिंग एन adjective. Read these sentences to understand the way an adjective can be replaced with a verb, noun or an adverb. So इन sentences के थ्रू आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हाउ वी कैन रिप्लेस एन एडजेक्टिव टू वर्ब, नाउन और एडवर्ब. लेट्स सी द फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज आई फील सैड अबाउट द रोड कंडीशंस इन द सिटी. मैं बुरा महसूस करता हूँ रोड कंडीशंस के बारे में जो सिटी की है, विच इज एडजेक्टिव. सो हमने क्या किया, वर्ब में चेंज करना है. द रोड कंडीशंस इन द सिटी सैडन मी. जो रोड कंडीशन है सिटी की, उसने मुझे दुखी कर दिया. वी हैव चेंज टू वर्ब. Second example is it was delightful to teach the piano to the 5-year-old girl. So adjective है कि ये delightful है. क्या delightful है, 5 साल की बच्ची को पियानो सिखाना. So we have to change into noun. It was delight to teach the piano to the 5-year-old girl. ये बहुत delight है एक 5-year-old girl को सिखाना. So in this way we have changed an adjective to noun. Last example is the new teacher is firm with his students, which is adjective because teacher कैसी है, firm है, कठोर है. The new teacher handles his students firmly. नई टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट्स को कठोरता के साथ हैंडल करती है, which is adverb. So that's how we can substitute an adjective. Next topic is substituting an adverb. Read these sentences to understand the way an adverb can be replaced with a noun, an adjective or a verb. Like above I have already explained you. So let's read the examples. The first example is the airport authorities took away his luggage forcefully. जो airport authorities थी उन्होंने forcefully उसका luggage ले लिया उससे दूर. That is adverb, forcefully. The airport authorities took away his luggage by force. So by force के यहाँ पर हमने क्या किया, noun कर दिया, force से लिया. Second example is it was surprising to see Matthew recover speedily after such a serious illness. ये बहुत surprising है मैथ्यू को इतनी speedily रिकवर करते हुए देखना, बेहतर होते हुए देखना इतनी सीरियस बीमारी के बाद, विच इज एडवर्ब, स्पीडीली. सो हमने क्या किया, एडजेक्टिव में चेंज किया. इट वॉज सरप्राइजिंग टू सी मैथ्यूज स्पीडी रिकवरी. स्पीडी रिकवरी दैट इज एडजेक्टिव आफ्टर सच अ सीरियस इलनेस. लास्ट एग्जाम्पल इज ही स्पोक टू हर persuasively and made her agree to part with the documents. So here persuasively is adverb and we have to change to verb. So he persuaded her to part with the document.
So this was the first part of the video in which I have explained you the transformation of sentences based on the meaning, how we can transform a sentence from one type to another. Rest of the explanation I'll give you in the second part of the video. So till that, keep watching and keep learning.